अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविज़न न्यूज़ जे पारां मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइट। नाज़रीन, गुफ़्तगू कयूं था अफ़गानिस्तान जे सियासी मंज़रनामे जे हवाले सां अमन ॻाल्हियूं जेके अफ़गानिस्तान जी हुकूमत ऐं तालिबान जे विच में हलंदड़ हुयूं उन हवाले सां जेको अमेरिका में चूंडूं थियूं ऐं उन चूंडुनि खां पोइ जेका बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन नई आई आहे उन खां पोइ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जेको आहे हिकिड़ो ख़त लिखियो आहे अशरफ गनी खे। उन ख़त में हुन ॿ टे इम्पोर्टेंट ॻाल्हियूं कयूं आहिनि जंहिंमें हुन चयो आहे त हू सोचनि था त हिन मामले जो तोड़े जो हुननि रिव्यू पूरो न कयो आहे, पर हुननि जी जेको इनिशियल कंक्लूजन्स आहिनि उन मुताबिक़ हू चाहिनि था त इहे पीस टॉक्स जेके आहिनि उहे उन्हनि में तेज़ी अचणु घुरिजे। उन सां गॾोगॾु हू चाहिनि था त हिकिड़ी का फॉरेन मिनिस्टर्स जी जेका आहे पंहिंजो का कॉन्फ्रेंस थिए जंहिंमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान ऐं अमेरिका जा फॉरेन मिनिस्टर जेके आहिनि उहे शामिलु थियनि ऐं इहा टर्की में जेको आहे सजेस्ट कई वई आहे। उन खां अलावा जेको आहे इन ॻाल्हि ते ज़ोर भरियो वियो आहे त हुन जेको आख़िर में जेको लिखियो वियो आहे जेको उनजो लफ़्ज़ उन जेके उन ख़त में लिखिया विया आहिनि त हुनजे टोन जी जेका अर्जेंसी खे सम्झो वञे। बहरहाल गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर साफ़ी नाम्यारे तजरिगार जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब सां। रहीमुल्लाह यूसुफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहीमुल्लाह यूसुफ़ साहब, ये जो अमेरिका के अंदर इलेक्शंस थे तो एक तरह से जो अफगानिस्तान का पीस टॉक्स का मामला था वो कोई इतना लेम लाइट में नहीं था, क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखें वो एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह थी कि जब नई हुकूमत आएगी, नया सदर आएगा तो वो अपनी सारी जो पिछली पॉलिसी है ट्रम्प की उसकी रिव्यू की जाएगी और कुछ उन्होंने फैसले फौरी तौर पर कर दिए, कुछ अभी भी उसके ऊपर नजरसानी हो रही है। तो ये जो नई पॉलिसी है अफगानिस्तान के हवाले से और जो ट्रम्प ने अमन माहिदा तालिबान के साथ किया था पिछले साल फरवरी में दोहा में, तो उसके अभी खतोखाल दायर हो रहे हैं। यानी देखें अब ये जो कुछ तजावीज़ जो अमेरिका ने रखी हैं, जो ज़ुल्म खलीजात काफ़ी महीने बाद इस खत्ते में आए, काबुल गए, इस्लामाबाद गए, फिर दोहा भी गए, जर्मनी भी होकर आ गए, वहाँ पे नेटो ममालिक के लोगों से मुलाकातें हुई। तो एक तो वो पैगाम लेकर आए, फिर ये एंटनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनका खत भी आ गया। तो ये वाकई अमेरिका को जल्दी भी है लेकिन वो मोहतात भी है और मुझे लगता है कि 1 मई तक तो वो अपनी फ़ौज को नहीं निकालेगा जिस तरह दोहा माहदे में हुआ था, क्योंकि ये जो काम करने जा रहे हैं जो उनकी तजावीज़ हैं कि ये एक इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस होगी, तुर्की में, वो तो अफगानों की होगी। एक जो अहम ममालिक हैं, इलाकाई ताकतें हैं, इनकी कॉन्फ्रेंस UN की सरपरस्ती में होगी, वो जर्मनी में, वो 2 कॉन्फ्रेंसें होंगी, उसमें भी काफ़ी वक्त लग जाएगा। फिर जो अफगान हुकूमत को जो एक मशवरा दिया है या ख़बरदार किया है अमेरिका ने, ज़ाहिर है वो भी उसका भी अभी असर तो पूरी नहीं होगा लेकिन उसका असर ज़रूर होगा। और तालिबान से भी कहा गया है कि वो एक आर्जी जंगबंदी करें 90 दिन के लिए ताकि बात आगे बढ़े। तो ये तालिबान के लिए भी एक पैगाम है कि ये एक मौका है उनके लिए भी। तो मेरे ख्याल में ये लग ये रहा है कि बाइडन इंतज़ामिया बहुत संजीदा है कि ये मसला हल हो जाए, अपनी फ़ौज को भी निकाले, लेकिन उस वक्त निकाले जब कोई अमन के लिए रास्ता हमवार हो जाए और ये जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात हैं ये भी आगे बढ़े। जो ख़त का जो मतन है उसमें तो बिल्कुल एक तरह से कबूल कर लिया गया है कि मई 1 तक जो है वो विथड्रॉल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंटनी ब्लिंकन साहब ने कहा है कि अगर ये होगा तो उसको तशवीश है कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाएगी और तालिबान जो है वो तेज़ी के साथ एक टेरिटोरियल गेन्स हासिल कर लेंगे। तो उससे तो ये लगता है कि अभी जब तक ये मामला पीस अपना अकॉर्ड नहीं हो जाता तब तक अमेरिका समझता है कि विथड्रॉल जो है वो मुमकिन नहीं है, नुकसानकार है। वो तो वैसे भी लग ये रहा था
जो बयानात आ रहे थे और जो एक दबाव था जो बाइडेन के ऊपर और जो उनके जो पार्लियामान सेनेट और कांग्रेस में जो बातें हो रही थी, मीडिया का भी जो रवैया था, मतलब ये रहा था कि बाइडेन से कहा जा रहा है कि ये आप ये 1 मई तक फौज को न निकालें, बल्कि तालिबान से मजीद रियायतें मांगे। ऐसा ना हो कि फिर अफगानिस्तान में अमेरिका के मुखालफिन जमा हो जाएं और 9/11 की तरह का वाक़या हो जाए। तो ज़ाहिर है बाइडेन इतना ख़तरा मोल नहीं लेंगे। ये लग रहा था कि वो मज़ीद वक्त लेंगे और ये 1 मई की तारीख तो बहुत करीब आ गई है। लेकिन ये है कि वो जो आपने जिक्र किया ना कि उन्होंने जो ये कहा है कि अगर गैर मुल्की फ़ौज, ख़ासतौर पर अमेरिकी फ़ौज निकल जाए तो फिर तालिबान को काफ़ी सहूलत हो जाएगी और उनको वो आगे बढ़ेंगे, कब्ज़े कर लेंगे। तो ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए ख़ास तौर पे भी एक वार्निंग है कि आप भी लचक दिखाएं अपने रवैये में। और आप यानी अमेरिका का ये तजिया है उनके फ़ौज का, उनकी हुकूमत का, कि ये हुकूमत जो है ये कमज़ोर हो जाएगी, सिक्योरिटी के हालात ख़राब हो जाएंगे, तालिबान मज़ीद मजबूत हो जाएंगे, कब्ज़ा कर लेंगे। तो ये मेरे ख्याल में देखें अफ़गान हुकूमत अशरफ गनी का रवैया काफ़ी जो है वो सख्त है और वो बार बार कहते हैं कि वो मुंतखब सदर हैं और वो मुंतखब सदर ही के हवाले करेंगे, वो बुरी हुकूमत की वो मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन उनके इंतखाब के बारे में तो आपको याद है कि उनके गनी के ऊपर, और फिर तालिबान से जो कहा जा रहा है कि वो अपने हमले कम करें, आर्जी जंगबंदी कर ले, तो ये उनके लिए भी ज़ाहिर एक वार्निंग है कि ये मौका उनके हाथ आया है और वो उसका फ़ायदा उठाएं और अमन की बात को आगे बढ़ाएं। अच्छा, जो फॉरेन मिनिस्टर की अपना कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ रखी गई है जिसमें रूस, चीन, अमेरिका, ईरान, हिंदुस्तान और अमेरिका की शिरकत के बारे में कहा गया है, सऊदी अरब नहीं है इसमें, यूएई नहीं है, कोई अरब मुल्क इसमें नहीं है। आपके ख्याल में इस बात की कोई अहमियत है या आपके ख्याल में वो उनकी कोई रिलेवेंस नहीं बनती? या जिनका ज़्यादा रोल है रहा है या जिनका असर है किसी एक फरीक के ऊपर, अफगान हुकूमत या तालिबान के ऊपर, उनको बुलाया गया है। तो देखिए चीन और रूस तो खत्ते की भी बड़ी ताकतें हैं और आलमी ताकतें भी हैं और रूस ने काफ़ी कॉन्फ्रेंस से बुलाई अफगानिस्तान के हवाले से और वो समझता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन उसके लिए एक ख़तरा बन सकती है। वैसे भी मंशियात अफगानिस्तान से रूस के रास्ते यूरोप पहुँचती हैं और दाइश भी है, चीन को भी दाइश से ख़तरा है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट से ख़तरा है, अलकायदा से ख़तरा है। तो ये हर एक मुल्क जो है इनके अफगानिस्तान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ख़दशात हैं। तो ईरान देखें, ईरान का नाम पहली बार सामने आया है, अमेरिका ने पहली बार ईरान को भी शामिल करने की बात की है। ये एक बड़ी पेशरफ्त है, यानी बाइडेन का रवैया ट्रंप के मुकाबले में ज़्यादा लचकदार है और वो समझते हैं कि ईरान अगर शामिल नहीं होगा तो वो स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकता है, उसको शामिल करना चाहिए। उसका भी असर रसूख है, ख़ास तौर जो वहाँ पे अहले तशी हैं, हज़ारा है और मग़रबी अफ़गानिस्तान में काफ़ी तरक्याती काम भी ईरान ने की है। पाकिस्तान ज़ाहिर है इसका बड़ा अहम किरदार है, तालिबान से बहुत ही पुराने और करीबी ताल्लुकात भी हैं। और इंडिया को इसलिए शामिल किया गया कि देखें इंडिया अगर कुछ गलत हरकत करना चाहे तो फिर भी अमन की मंजिल जो है वो दूर हो जाएगी और वो स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकता है, तो उसको भी शामिल किया जा रहा है। फिर सारे मुल्कों के जो कंसर्न हैं अफगानिस्तान के हवाले से उसकी भी वो बात कर सकते हैं। अभी तो अमेरिका ने तालिबान से वादा किया, आपके ख्याल में सऊदी अरब को वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ये जो बाकी मुल्क हैं उनको खदशा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है या होगी, तो ज़ाहिर है उनके कंसर्न भी समझ जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस में और फिर ये यूएन की सरपरस्ती होगी
تو وہ بڑی اہم بات ہے کہ یو این کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. یو این کا ایک بڑا اہم رول ہے, ایک بڑا اجالا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی تجویز ہے. اور سعودی عرب, ترکی, یہ باقی جو سنٹرل ایشین ممالک ہیں, باقی جو بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں, انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, دیکھیں ان کا تو ایک ضمنی سا رول ہے. کوئی امن مذاکرات سعودی عرب میں نہیں ہے. سعودی عرب کے طالبان کے ساتھ تعلقات بڑے خراب, یہ ایک بھی خراب. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی طالبان چاہیں گے. البتہ قطر کی بات ممکن تھی, لیکن قطر چھوٹا ملک ہے. قطر کو اگر آپ بلائیں گے تو سعودی عرب, یو اے ای وغیرہ ناراض ہو جائیں گے, پھر ان کو بلانا پڑے گا, تو پھر وہ تعداد بہت بڑھ جائے گی. میرے خیال میں یہی سب سے اہم ممالک ہیں اور ان کو آنا اچھا چاہیے. رحیم اللہ صاحب, اور جو یہ امریکی رپورٹس ان 16 سالوں کے اندر آتی رہی ہیں, اس میں یہ بارہا اس بات کی نشاندہی کی جاتی رہی ہے کہ طالبان کے جو سورس آف فنڈنگ ہیں اس میں امریکہ, اپنا سعودی عرب اور یو اے ای کے جو اپنا بڑے لوگ ہیں وہ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس حوالے سے اپنا نہیں بنتی اپنا سعودی عرب کی ایک ریلیونس اس سارے معاملے میں؟ دیکھا, وہ سعودی عرب نے انہیں کافی اقدامات اٹھائے ہیں پہلے سے, اور کافی میرے خیال میں جو آفیشل کی اگر فنڈنگ ہو رہی تھی بینکوں کے ذریعے یا کچھ, وہ میرے خیال میں بھی نہیں ہو رہی. یہ تو پرائیویٹ سٹیزن انڈیویژول اگر وہ کوئی طالبان کی امداد کر رہے ہیں تو وہ خفیہ طریقے سے کر رہے ہیں, اور وہ پہلے بھی ہو رہی تھی, اب بھی ہوگی, آئندہ بھی ہوگی. تو وہ میرے خیال میں اتنا کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے. اور یہ ہے سعودی کہ عرب کا انفلوئنس بھی مانا جاتا تھا کہ بڑا انفلوئنس ہے حکومتوں کے ذریعے, یہ سعودی عرب, بحرین, یہ سارے جو ہیں, عمان بھی ہے, ان کے ذریعے بھی کافی کچھ کر سکتا ہے طالبان کی فنڈنگ روکنے کے لیے. تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا خطرہ ہے. اور امریکہ کے پاس اور بھی طریقے ہیں, وسائل ہیں, وہ ان کو بھی استعمال کریں. اچھا, اس سارے پروسیس کے اندر ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے حوالے سے بون کے اندر کانفرنسز ہوئیں, دوسری جگہوں پہ ہوئیں, اور جو پچھلا تجربہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب اپنا پاکستان میں جو گورنمنٹ تھی 80s کا دور تھا, تو اس وقت جو افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے جو اپنا جنیوا میں کانفرنس بلائی گئی تھی, تو اس میں کافی ممالک شامل تھے, خاص طور پر اپنا سینٹرل ایشین اسٹیٹس, ازبک اور تاجک, جن کا بارڈر بھی بنتا ہے اور ان کے اس اپنا ایتھنیسٹی کے لوگ بھی وہاں پہ رہتے ہیں. اس مرتبہ ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا. وہ تو جنیوا مذاکرات جو ہو رہے تھے وہ تو روس, امریکہ, پاکستان ان کے درمیان ہو رہے تھے براہ راست. افغان مجاہدین کی نمائندگی پاکستان کر رہا تھا, اور وہ جنیوا میں پھر وہ معاہدہ ہوا. گورباچوف چاہ رہے تھے کہ وہ روسی فوج کو نکالیں. انہوں نے یہ ایک باعزت طریقہ استعمال کیا, بات چیت ہوئی, اور پھر اسی جنیوا معاہدے کے تحت روسی فوج کی واپسی ہوئی. ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی, لیکن کم از کم یہ ہوا کہ جاتے ہوئے وہ باقاعدہ منظم طور پر نکلے, کوئی ان کے اوپر حملہ نہیں ہوا. تو وہ جو باقی آپ نے ذکر کیا کہ یہ ملک, وہ تو اس وقت آیا جب معاہدہ ہو گیا, بات چیت مکمل ہو گئی, دستخط ہو رہے تھے, پھر ان کو بلوا گیا. جس طرح آگے دوحہ معاہدہ ہوا امریکہ طالبان کا, اس میں بھی سارے ملکوں کو بلایا گیا, اور ان کی موجودگی میں وہ معاہدے کے اوپر دستخط ہوئے. تو آپ کے خیال میں یہ کب تک سمجھتے ہیں کہ مئی میں تو نہیں نکل رہے, کانفرنس اس سے پہلے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یا آپ کے خیال میں ابھی ٹائم لگے گا, جب امریکہ کا ریویو پورا ہوگا تب اس ماہ میں معاملات آگے بڑھیں گے؟ نہیں, میرے خیال میں یہ جو پہلی کانفرنس ہے یہ 4-5 ملکوں کی یو این کے ماتحت بون جرمنی میں, وہ تو جلدی ہو جائے گی میرے خیال میں. اور پھر اس میں تو ظاہر طالبان نہیں آئیں گے, اور نہ افغان حکومت کی ایسی کوئی باقاعدہ نمائندگی ہوگی, تو وہ تو ہو سکتی ہے. لیکن وہ جو استنبول والی کانفرنس ہے نظم افغان, اس میں ظاہر طالبان کی رائے لینی پڑے گی, وہ اہم فریق ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کتنے افغان آئیں گے, اور
باقی ملکوں کا کیا رول ہوگا وہ چیزیں بھی واضح ہونا باقی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ امریکہ چاہتا ہے کہ یکم مئی سے پہلے کوئی اہم مسئلے ہو جائیں, کوئی کانفرنسیں ہو جائیں, تاکہ کچھ بات آگے بڑھے اور پھر وہ کوئی صحیح تاریخ دے سکے افغانستان سے نکلنے کی. اس لیٹر کے ٹون سے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک طرح سے طالبان کا جو اپر ہینڈ ہے, اس کی جو سپیریٹی ہے افغانستان کے اندر, وہ تسلیم کر لی گئی ہے؟ کیونکہ لکھا گیا ہے کہ اگر ہم پیسے دیتے بھی رہیں لیکن اگر فوج وتھڈرا ہو گئی تو پھر سیکورٹی سچویشن خراب ہو جائے گی اور طالبان جو ہے وہ قبضے کر لیں گے. ہاں بالکل, یہ امریکہ کا تو ظاہر ہے تجربہ ہے افغانستان کی جنگ کا. 20 سال سے ان کی فوج وہاں پہ ہے, 1.5 لاکھ فوج تھی امریکہ اور نیٹو کی. ان کو پتہ ہے کہ طالبان کی قوت کتنی ہے اور ان کا جذبہ کیا ہے. اور یہ تو امریکہ بمباری کر رہا ہے, فضائی قوت استعمال کر رہا ہے, اس پہ طالبان کو روکا گیا ہے. افغانستان کی فوج میں بھی ان کی لیڈ اس میں بڑی جلدی سے لڑی ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کا مرال اتنا مضبوط نہیں جتنا طالبان کا ہے. تو امریکہ ایک قسم سے وارننگ دے رہا ہے اشرف غنی حکومت کو, کہ ان کے اشرف غنی اور ان کے وزراء وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سنبھال لیں گے, ہم خود جنگ کر رہے ہیں, یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ. لیکن میرے خیال میں امریکہ کا جو موقف بالکل مختلف ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ غیر ملکی فوج نکل جائے تو پھر افغان حکومت مشکل میں پڑ جائے گی اور طالبان کو کامیابیاں حاصل ہوں گی. وہ چاہتے ہیں کہ اشرف غنی حکومت اس سے پہلے اپنے موقف میں لچک دکھائے اور کوئی پیس ایگریمنٹ ہو جائے. امن مخالف قوتیں ہیں افغانستان میں, ان کا راستہ روکے. بڑی مہربانی اپنا رحیم اللہ یوسف صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, افغانستان جی صورتحال تے اہم پیش رفت بائیڈن انتظامیہ पहिरियों कदम जे तौर ते जेको कयो आहे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन जेको आहे उहो ख़त लिखियो आहे अफ़गान सदर अशरफ गनी खे, जंहिंमें हुन इहा तजवीज़ ॾिनी आहे त जेके रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान ऐं अमेरिका जे फॉरेन मिनिस्टर जी कॉन्फ्रेंस सॾाई वञे. ऐं उनखां अलावा जीअं रहीम साहब ॿुधायो पिया त हिकिड़ी कॉन्फ्रेंस बोन में थींदी ऐं हिकिड़ी कॉन्फ्रेंस इस्तंबुल में थींदी. ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे इन ॻाल्हि जी बि तस्लीम कयो वियो आहे त जेकॾहिं पीस एग्रीमेंट खां सवाइ जेकॾहिं विथड्रॉल थियो अमरीकी फ़ौजनि जो त तालिबान खे मौक़ो मिली वेंदो त हू ॿीहर कब्ज़ा करे सघनि. नाज़रीन, वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था. असां गॾु रहिजो. वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं. हिन वक़्तु गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जे अंदरि सेनेट चूंडुनि जे हवाले सां. ऐं असां सां हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा अॻूणा सेक्रेटरी जनाब कंवर दिलशाद साहब. कंवर दिलशाद साहब, सलाम अलैकुम. वालेकुम सलाम. कंवर दिलशाद साहब, जो हुआ इस वक्त सेनेट के इलेक्शंस के अंदर, जी भाई, और ये वीडियोस भी आई, बातें हुई, और फिर हमने देखा जो वोट थे वो किस तरह पड़े. 160 उनके थे, 180 उनके थे, 160 वाले 169 ले गए. इससे पहले भी हमने देखा था कि 64 लोग लेके अपोजिशन गई थी सादिक संजरानी के खिलाफ वो लेने अपना नो कॉन्फिडेंस करने, लेकिन वो 50 भी साबित वहाँ पे नहीं कर सकी. तो कोई कानून, कोई लॉ, कोई ऐसी नहीं है, या आपके ख्याल में ये इस तरह वोट दिया जा सकता है? इसके बारे में हमने भी बड़ी रिसर्च की, बड़ी तहकीक की, और अपने वक्त में जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था हमने इस पर बहुत काम भी किया. हमने इंटरनेशनल जो हैं बड़े बड़े इदारे जो इलेक्टोरल सिस्टम पे काम करते हैं उनसे भी हमारी मशावरत हुई. तो उन सब की राय ये थी कि ये सिर्फ आप नारा तरीके से आप अपना वोट कास्ट करें, जमहूरी तरीके से करें और हार्स ट्रेडिंग ना करें तो वो बेहतर है. इसका कोई कानून, और इस कानून से आप इसके बारे में कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये रात के अंधेरे में सौदे होते हैं दुबई में, लंदन में, तो इसी तरह और जहाँ जहाँ भी जाए को मौका मिलता है. तो इस लिहाज से इस पर कोई कानून साजी हो भी नहीं सकती. जैसे कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं उनका वैसे तो नरेटिव बयानिया दुरुस्त है कि उन्होंने जिस पर कोशिश भी की कि इसके ऊपर एक कानून साजी हो जाए, लेकिन बड़ा चूँकि हुकूमतों के आपस के अपोजिशन के इख्तलाफात होते हैं, राय नहीं मिलती, तो इसकी वजह से वो बिल जो है कौमी असम्बली में
پیش ہوا, ریجیکٹ ہو گیا, مسترد ہو گیا. پھر انہوں نے اس پر آرڈیننس بھی کیا. اس آرڈیننس کے اندر بھی قانونی طور پر اس کے اندر بڑا ابہام تھا. اس کے اندر اس کی جو لینگویج تھی, جو اس کی انگریزی تھی, جو اس کا طریقہ کار تھا, وہ انتہائی ابہام پیچیدہ, جس کی وجہ سے وہ ہماری سپریم کورٹ نے بھی اس کو دیکھا, پڑھا, غور و خوض کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے بھی اس کو کر دیا. تو الیکشن کمیشن پاکستان کا پوائنٹ آف ویو لیا تو ان کا بڑا ایک قانونی اور آئینی موقف تھا اور ہے کہ بھی جب تک آپ آئین کے آرٹیکل 226 میں اوپننگ بیلٹنگ کے بارے میں ترمیم نہیں کر لیتے تو اس طرح کا ایکٹ میں ترمیم کرنا, رول میں تک ترمیم کرنا, یہ غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے. تو سپریم کورٹ نے اس پر ایگری کیا, اتفاق کیا, اور ساتھ میں یہ کہا اچھا جی ٹھیک ہے, آپ اپنی کوئی ٹیکنالوجی اختیار کر لیں. اب معاملہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ایک ہفتے سے الیکشن کمیشن کو بہت ذلیل کر رہے ہیں. اب الیکشن کمیشن ٹھیک ہے, پہلے سیاسی جماعتیں ان کو ترجیح کرتی تھی, ذلیل کرتی تھی, تو الیکشن کمیشن ان کے بارے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا. تو ظاہر آپ اس کو نقش قدم پر چلتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کو خراب تنقید کر رہے ہیں, تو کریں, ٹھیک ہے, حق بنتا ہے پرائم منسٹر صاحب کا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ آپ ترمیم کر لیں, ہم جیسے ترمیم کریں گے, جیسے لا آف لینڈ ہوگا, ہم کارروائی کر لیں گے. اب سارے وزراء پوری قوم کو گمراہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بیلٹ پیپر پہ بار کو لگانا تھا نا آپ نے, تو بار کو لگانا تو آسان تھا, 100% ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں, بار کو لگانا تو آدھے گھنٹے کا ہوتا, لیکن اس پہ ترمیم کون کرتا؟ اب بیلٹ پیپر پر بار کو لگ گیا, ترمیم ہو گئی. ترمیم جو ہے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا. تو پھر یہ معاملے اس طرح سے آگے پیچیدگی پیدا ہو گئی. اب حکومت کا اپنا ایک سیاسی طریقہ کار ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, اپنی جگہ درست ہوں گے, لیکن ہم تو آپ کی ذریعے یہ رہنمائی کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ اگر اداروں کو تذلیل کریں گے, ذلیل کریں گے, حکومت ذلیل اور تذلیل کرے گی, تو پھر ادارے جو ہے پھر اپنا جس وقت سٹیپ اٹھائیں گے اپنی انٹیگریٹی کو بچانے کے لیے, اپنے ڈیفینس بچانے کے لیے, تو پھر آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. قمر دلشاد صاحب اॻूणा سیکریٹری इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सां गॾु हुआ. मुल्क जे अंदरि जेके सेनेट चूंडूं थियूं आहिनि ऐं उन खां पोइ जेको आहे जेको मंज़रनामो आहे, जीअं कमर दिलशाद साहब ॿुधायो पिए त वज़ीर आज़म पाण ऐं न सिर्फ़ु पाण बल्कि उन सां गॾोगॾु वज़ीरनि जी टीम जेका आहे उहा हिन वक़्तु पाकिस्तान जे इलेक्शन कमीशन जे मथां सख़्तु तनक़ीद करे रही आहे. हालांकि आम तौर ते इहो चयो वेंदो आहे त मुल्क जे अंदरि जेका इदारा जेके आहिनि उहे हुकूमत खे सपोर्ट कंदा आहिनि, पर हिन भेरे हुकूमत पाण जेका आहे उहो इदारनि जे ख़िलाफ़ु जेका आहे उहा ॻाल्हाए रही आहे. न सिर्फ़ु इहो, पर हाणे ईंदड़ जेका इलेक्शन आहे सेनेट जी, जंहिंमें जेको आहे यूसुफ रज़ा गिलानी ऐं पंहिंजो सादिक संजराणी जेके आहिनि, ॿई उम्मीदवार नामज़द थी चुकिया आहिनि हुकूमत ऐं PDM जे पारां. उन हवाले सां बि ॾिसणो इहो आहे त जेका हाणे PDM चवे थी त जेकॾहिं वज़ीर आज़म खे एॾो ई शौक़ु आहे ट्रांसपेरेंसी जो, त हू जेको गुज़िरियल भेरे शो ऑफ हैंड जी ॻाल्हि पियो करे उहो हाणे शो ऑफ हैंड जी ॻाल्हि करे छॾे. छा वज़ीर आज़म इहा ॻाल्हि क़बूल कंदो या न कंदो? यकीनी तौर ते इहो बि हिकिड़ो सुवालु आहे ऐं जंहिंजो जवाबु सभिनी खे ख़बर आहे त वज़ीर आज़म साहिबु हिन मौक़े ते इहे शो ऑफ हैंड वारे प्रोसेस में न वेंदो, छाकाणि त हिन वक़्तु सेनेट जे अंदरि 47 वोट जेके आहिनि उहे हुकूमत जा आहिनि, हुकूमत ऐं उनजे इतिहादियुनि जा आहिनि, जॾहिं त 53 वोट जेके आहिनि उहो PDM जे पार्टियुनि जा आहिनि. पर लेकिन अञा बि जेके कोशिशूं हलनि थियूं, जीअं मुतहदा क़ौम मूवमेंट सां पीपल्स पार्टी जो वफ़द मिलियो, ईअं ॿियनि जाइ थी सघे थो त इहो वोटनि में अञा फ़र्क़ु अची वञे. बहरहाल हीउ जेको सॼो चकर आहे उन इलेक्शन जे हवाले सां, उन में जेके हींअर ताईं सूरत हाल आहे उहा इहा आहे त मुल्क जे अंदरि चूंडूं जेके आहिनि उहो हिकिड़ो शफ़ाफ़ चूंडूं, हिकु अहिड़ो ख़्वाबु थी वियो आहे जंहिंजे साभियां हुजण जे बारे में को बि फ़िलहालु जेको आहे रस्तो नज़र नथो अचे कंहिंखे बि किथां, न हुकूमत खे न मुख़ालिफ़ धुर खे. ऐं उन चूंडुनि खे जेको आहे मैनिपुलेट करण लाइ, उन्ही खे उन मां फ़ाइदो हासिलु करण लाइ हुकूमत खे जॾहिं वारो मिले थो त हुकूमत बि पंहिंजा हरबा इस्तेमालु करे थी, मुख़ालिफ़ धुर जे पार्टियुनि खे जॾहिं वारो मिले थो त उहे बि पंहिंजा हरबा इस्तेमालु करे चूंडुनि खे जेको आहे, अंग्रेज़ जो हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे बाय हुक और क्रुक,
मतिलबु त जीअं बि करे जेको कुझु करिणो पइजी वञे उहो करे उहो जेको आहे चूंडुनि में फतह हासिलु करण जी कोशिशि कई वञे थी। पाकिस्तान जे सियासी मंज़रनामे ते यकीनी तौर ते इहा हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे, वॾो इम्पॉर्टेंट मसइलो आहे, अहम मसइलो आहे पाकिस्तान जे सियासत में त इहो असांखे चूंडूं बि असां मुल्क जे अंदरि शफ़ाफ़ नथा कराए सघूं। जी नाज़रीन, 12 मार्च ते सेनेट चूंडुनि जे हवाले सां गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। हिन वक़्तु असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नाम्यारा तर्जुमेगार जनाब रज़ाक खट्री साहब। रज़ाक खट्री साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रज़ाक खट्री साहब, कीअं था ॾिसो जेको 12 में पंहिंजो मार्च ते चूंडूं पियूं थियनि, छा इस्लामाबाद जूं हवाऊं ऐं ज़रिया छा था चवनि? भैया साहब, जोड़ तोड़ जो सिलसिलो तेज़ी सां जारी आहे ऐं सादिक संजराणी खे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी ऐं इस्टेब्लिशमेंट जी मुकमल हिमायत हासिल आहे। ऐं सची ॻाल्हि इहा आहे त जेके फिगर आहिनि उनमें सिर्फ़ु सादिक संजराणी खे 3 वोट घुरिजबल आहिनि। मां सम्झां थो त जेकॾहिं इन्हनि ॿिनि अहम क़ुवतनि जी हिमायत हासिल हुजे त सादिक संजराणी जे लाइ 3 वोट तोड़ण को वॾो इशू न आहे। सो अलाए छो माना अंग अखर बज़ाहिर जेके अपोज़िशन जा आहिनि उहे वधीक हुजण जे बावजूद बि सादिक संजराणी जी कामयाबी कॾहिं पार्टी पोज़ीशन आउं तव्हांखे ॿुधायां त इन में PTI जा अॻु में 26 मेंबर हुया, अॼु हिकिड़ो आज़ाद जेको अब्दुल कादर हुयो उहो बि शामिल थी वियो आहे। ऐं इन हिसाब सां बलूचिस्तान अवामी पार्टी आहे उन जा 12 आहिनि, MQM जा 3 आहिनि ऐं अहिड़ी रीति जेको आहे सो क्यू लीग, फंक्शनल लीग ऐं फाटा जा इहे समूरा जमायत मिलाए जेकॾहिं पाण कयूं त असल में बज़ाहिर त ऐवान जेको आहे उहो टोटल 100 जो आहे, पर इसाक डार छाकाणि त उनजी रुकनियत मुअत्तल आहे, उहो मुल्क खां ॿाहिरि आहे, त हिन वक़्तु ऐवान जेको आहे 100 जो न पर 99 जो आहे। जमात इस्लामी हिन सॼी सूरताल में पाण खे गैर जानिबदार रखण जो ऐलान कयो आहे, त उनमें हिन वक़्तु अपोज़िशन वटि पंहिंजी जेका स्ट्रेंथ आहे उहे 52 ऐं हिकिड़ो फाटा जो जेको मेंबर आहे शमीम आफ़रीदी, त उहे कुल मिलाए जेके सो 53 थियनि था। ऐं हुकूमत वटि जेको आहे सो 47 माण्हुनि जी अक्सरियत आहे, 98 जो हिन वक़्तु ऐवान आहे। जमात इस्लामी ऐं जेकॾहिं इसाक डार खे कढिजे त यानी 50 वोटनि ते को बि जेको आहे सो दुर चेयरमैन थी वेंदो। त माना जेकॾहिं हुकूमत वटि 47 आहिनि ऐं 3 माण्हू जेकॾहिं उहे चूंडजनि था, वोट कनि था सादिक संजराणी खे, जीअं नो कॉन्फिडेंस में थियो हो, त आउं सम्झां थो त सूरताल को एॾी शायदि परेशान कोन्हे हुकूमत लाइ। ऐं इहो ई सबबु आहे त PDM जे पारां वाज़े तौर ते चयो पियो वञे त जेको आहे सो हुकूमत पैसा जेको ऑफर करे पई या दबाव विझे पई। त मूंखे लॻे इएं पियो त यूसुफ रज़ा गीलानी शायदि लीडर ऑफ अपोज़िशन थिए या त हुकूमत सां मुक़ाबिलो करण जे लाइ ॿी धुर जी हिमायत मिली वञे PDM खे, त पोइ त मुमकिन आहे। बाक़ी सूरताल बज़ाहिर हिन वक़्तु ताईं पर जेको PDM जा कल्ह फ़ैसिला थिया आहिनि उनमें त मुंहिंजे ख़्याल में तय कयो वियो आहे त लीडर ऑफ अपोज़िशन जेको आहे उहो मुस्लिम लीग नून जो थींदो ऐं डिप्टी चेयरमैन जी जेकॾहिं हिननि खे फतह मिली त उहा JUI जो थींदो। हा, JUI खे त हिननि ॾेई छॾियो आहे, अनाउंस करे छॾियो अथनि। त उहो ई मां चवां थो त लीडर ऑफ अपोज़िशन त शायदि यूसुफ रज़ा गिलानी न थी सघे। न, उहो इन सूरत में त जेकॾहिं फ़र्ज़ु करियो चेयरमैन सेनेट उहो नथो थिए त पोइ लीडर ऑफ अपोज़िशन यूसुफ रज़ा गीलानी थींदो, छाकाणि त पोइ अक्सरियती पार्टी नून लीग कोन्हे, पीपल्स पार्टी आहे अपोज़िशन में। पीपल्स पार्टी वटि जेको आहे सो 21 मेंबर आहिनि, जॾहिं त नून वटि 18 आहिनि, त ॿुधाए रहा त जेका अक्सरियती जमात हूंदी उहा ई लीडर ऑफ अपोज़िशन थींदी आहे। पर हिननि असल में जेका अज़्यूम कयो आहे त जेकॾहिं चेयरमैन यूसुफ रज़ा गीलानी थी थो वञे त पोइ लीडर ऑफ अपोज़िशन जी जेका चेयर आहे सेनेट में अच्छा, ही त थी स्टेटिस्टिक्स जी ॻाल्हि, अंगनि अखरनि जी ॻाल्हि, पर जेका सियासत आहे उनमें जॾहिं 26 तारीख़ ते लॉन्ग मार्च जे काफ़िलनि जो हिकिड़ो भउ जेको आहे PDM जेका आहे उहा ठाहियूं बीठी आहे त सॼे मुल्क मां काफ़िला निकिरंदा ऐं उनखां जेको आहे 12 ॾींहं 14 ॾींहं पहिरें जेकॾहिं चूंडूं थियनि थियूं पियूं, तव्हांजे ख़्याल में उनमें जेको इहो तासिर हुयो जेको PDM जो मुसलसल मुतालबो आहे त भई असांखे ऐं हुकूमत खे छॾियो त असां पाण में ठही पवंदासीं, छा वाक़िअतनि असांजा जेके आहिनि पंहिंजो ॿिया जेके ताक़तवर धुरियूं आहिनि उहे वाक़िअतनि इन में फुल तरह ते इन्वॉल्व थींदा?
सर इन्वॉल्व त तव्हां ॾिसो न मक़सदु तव्हां अंदाज़ो लॻायो त जेकॾहिं इन में इन्वॉल्व नथा थियनि त यूसुफ रज़ा गिलानी जे चेयरमैन सेनेट थी थो वञे त ज़ाहिर आहे त इहा हिकिड़ो वॾो मुल्क जो उहिदो आहे जेको अपोज़िशन वटि अची वेंदो। हालांकि इहा ॻाल्हि असांजे घणनि दोस्तनि जे ज़हन में आहे जेकॾहिं अपोज़िशन खे चेयरमैनशिप जो उहिदो नथो मिले त पोइ उनजे लाइ छा परेशानियूं थींदियूं। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हुकूमत जे लाइ उहे मसइला कानून साज़ी जे हवाले सां उहे ई साॻिया मौजूदु रहंदा। आइन साज़ी उहा न करे सघंदी, सादी कानून साज़ी हुकूमत न करे सघंदी, छाकाणि त अपोज़िशन वटि ऑलरेडी अक्सीरत आहे। त हिन सूरत हाल में जेका अंदाज़ो इहो लॻाए सघिजे थो त का बि ॻाल्हि अॻु में इहा नथी करे सघिजे। हिन वक़्तु हुकूमत जी इहा कोशिशि आहे त सादिक संजराणी थी वञे, पर छाकाणि त आसिफ अली ज़रदारी इस्लामाबाद में मौजूदु आहे, मरियम नवाज़ हिते मौजूदु आहे ऐं इन्हनि समूरनि धुरियुनि जी इहा कोशिशि आहे त हर सूरत में यूसुफ रज़ा गिलानी खे जेकॾहिं असां चेयरमैन सेनेट कराए वेंदासीं त असांजी अख़लाक़ी ऐं जेका बरतरी थी वेंदी, नफ़्सियाती तौर ते हुकूमत मथां असांजो दबाव वधी वेंदो। त उनजे नतीजे में ज़ाहिर आहे त उनजा असर लॉन्ग मार्च ते घणा पवंदा ऐं पोइ माण्हुनि खे इहो बावर बि कराए सघिजे थो त हिन महाज़ ज़मीनी इलेक्शन में हुकूमत खे शिकस्त मिली आहे, सेनेट चूंडनि में जेको चेयरमैनशिप हो उन में हुकूमत खे शिकस्त मिली आहे। ज़ाहिर आहे त लॉन्ग मार्च जा असर घणा थींदा, पर मुंहिंजा सोर्स इहे ॿुधाइनि था त पाकिस्तान जी इस्टेब्लिशमेंट चाहे थी त लॉन्ग मार्च कंहिं बि सूरत में या त डिले थिए या न थिए, छाकाणि त मुल्क जा ॿई वॾा शहर जेके आहिनि उन में जेका आमद रफ़्त जो सिलसिलो आहे उहो रुकिजी थो वञे, डिस्टर्बेंस वधी थी वञे। उन जे नतीजे में छाकाणि त हिते पॉलिटिकल इलीट घणी रहे थी पाकिस्तान जी, तो उन जा जॾहिं मसइला थियनि था त उनखे पहिरियों दफ़ो या हर दफ़े ईअं थिए थो त इहो अहसासु थिए थो त रोड बंदि थियण सां केतिरी तकलीफ़ थिए थी। त इन करे ही चाहिनि था त अहिड़ी का सूरत हाल न थिए जीअं आलमी सतह ते पाकिस्तान जे लाइ का परेशानी पैदा न थिए। अच्छा, कल्ह जेको PDM जो इजलास थियो उनमें पीपल्स पार्टी जूं जेके रिथूं हुयूं उहे बाक़ी PDM जे मेंबरनि रद्द करे छॾियूं, ख़ासि तरह नो कॉन्फिडेंस मूव जेका आहे पंजाब असेंबली जे अंदरि या जेको आहे अॻिते जे लाइ तव्हांखे लॻे थो त जेकॾहिं यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट थी थो वञे त ख़ुदि जेको आहे पीपल्स पार्टी खे पंजाब जे अंदरि ख़ासि तरह साउथ बेल्ट जे अंदरि पंहिंजो असर रसूख़ वधाइण में का सपोर्ट मिलंदी सियासी तरह ते? फयाज़ साहब, मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त असल में हिन वक़्तु नून लीग जे अंदरि जेका कशमकश हले थी उहा इहा आहे त मरियम नवाज़ न रुगो नैरेटिव पर पार्टी जो कंट्रोल बि पाण जेको आहे सो खणी वरितो आहे। तव्हां नोट कयो हूंदो त अहमदा शहबाज़ जी पोज़ीशन सेकेंडरी थी वई आहे। शहबाज़ शरीफ़ जो नून लीग पारां को बयान बि जारी नथो थिए, हालांकि उहो जेल में आहे त ॻाल्हाए नथो सघे या ॿी ॻाल्हि आहे, पर मुख़्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ पंहिंजे अॻुवाणनि जा बयान जारी कंदियूं आहिनि। हिन वक़्तु उहा बि सूरत हाल कोन्हे। त हिन वक़्तु पंजाब जे अंदरि जंहिं अंदाज़ सां नून लीग सॼी शयुनि खे टेकअप कयो आहे ऐं उन में ॿियो साउथ पंजाब में जीअं तव्हां चयो, साउथ पंजाब में बुनियादी तौर ते पीपल्स पार्टी जो असरु घणो आहे, पर उनखां वधीक असरु साउथ पंजाब में इस्टेब्लिशमेंट जो घणो रहे थो। तो ही शयूं हिन वक़्तु पंजटा वारे अमल मां गुज़रनि पियूं ऐं जेसि ताईं सेनेट इलेक्शन चेयरमैन जी इलेक्शन थिए ऐं उनखां पोइ लॉन्ग मार्च जॾहिं की हिकिड़ी फ़ैसिला कुन पोज़ीशन में अचे थो त पोइ पाण इहा असेसमेंट करे सघंदासीं त साउथ पंजाब मां केतिरी हिमायत पीपल्स पार्टी खे मिली सघे थी। पर हिते ख़ुदि हिकिड़ो इहो सुवालु आहे त लॉन्ग मार्च जॾहिं इस्लामाबाद ईंदो त उहो घणा ॾींहं हिते हूंदो ऐं उनखे केरु यकीन दहियानी कराईंदो वापसी जी, छाकाणि त मथां रमज़ान शरीफ़ हूंदो। त इहो ख़ुदि अपोज़िशन जे लाइ वॾा चैलेंज आहिनि। उन सां गॾोगॾु ऐं ॿियो वॾो जेको चैलेंज आहे उहो फाइनेंस जो आहे त हिननि खे एतिरो अमाउंट किथां ईंदो। अॻु में इस्टेब्लिशमेंट जे स्पॉन्सरशिप में जेके धरणा थिया आहिनि उहे हुकूमतनि जो कुझु बिगाड़े कोन सघिया आहिनि। त हिन जेका जंहिं हुकूमत जे पोयां इस्टेब्लिशमेंट बीठी आहे ऐं जेके धरणो हणनि था उन वटि एॾी वॾी लेवल जो फाइनेंस बि कोन्हे, त पोइ इहो ख़ुदि हिकिड़ो वॾो चैलेंज आहे त इनखे कीअं हू जेको आहे सो हलाए सघंदा। साईं, धरणा जॾहिं हणंदा आहिनि त पंहिंजो ख़ादिम हुसैन रिज़वी बि त आख़िर जेको आहे सभिनी जा चेक वठी पोइ वियो हुयो, पोइ जेकॾहिं ॿियो कुझु न थियो त कम से कम ख़र्च पको त वठी पोइ थींदा न। पर हीउ कंहिंखां ख़र्च पखो वठंदा, हीउ असल मसइलो इहो आहे हिननि खे ख़र्च पखो केरु ॾींदो? जेके उथारण वारा हूंदा, जेके परेशान थींदा उहे ज़रूरु पोइ विच में पवंदा ख़र्च। न, मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हुकूमत शायदि ज़हन ठाहे चुकी आहे ऐं इमरान छाकाणि त बुनियादी तौर ते
तमामु घणी ज़िदी तबियत जो माण्हू आहे, सो हू चाहे थो त कंहिं सूरत में इन्हनि खे नाकाम कजे त पोइ जीअं इन्हनि ते कुटको इन्हनि ते ॿीहर वरी शुरू करणु घुरिजे। पर ज़ाहिर आहे इहे अहम मामलनि जा फ़ैसिला इमरान अकेलो त न करे सघंदो। इहो त मुंहिंजे ख़्याल में मुल्क जे अंदरि ॿिया जेके स्टेक होल्डर्स आहिनि उहे मुंहिंजे ख़्याल में हिननि फ़ैसिलनि में वधीक पंहिंजो रोल अदा कनि। डेफिनेटली, बिल्कुलु डेफिनेटली, इहो हिन में को शक कोन्हे। तव्हांजी वॾी महिरबानी रज़ा खट्री साहब, तव्हां असांखे जॉइन कयो। नाज़रीन, गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी सेनेट चूंडुनि जे हवाले सां आइनी ऐं क़ानूनी मामलनि ते क़मर दिलशाद साहब जी गुफ़्तगू ऐं सियासी मामलनि ते सीनियर सहाफ़ी नामे तर्जुनिगार रज़ा खट्री साहब जी गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी। सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त सदाईं गॾु।